guys. Hi. So could you please let our viewer know about the experience what you had in Dakshina Chitra? Yeah, sure. I'm Deepika. This is my first time I visit here. It's a very nice place. I enjoyed really very much here. The beautiful art and craft. It's showing the culture of South Indian exactly as it is given in the net. So yeah, there are huge of things which you can enjoy when you come here, enter here. You can see all around the things are made of the. And where you from? We are from Jharkhand, Wow. so it's a great experience for us to be here. And that's a lovely place too, Jharkhand. Yeah. And ma'am, you? I'm Vinita. I'm too from Jharkhand. We are actually siblings. Oh, that's why you guys look alike. Okay. Sure. Okay. अभी घूमा बहुत अच्छा है. This experience and that art and craft was too good. एंड हम लोग ये कहना चाहेंगे आप अगर आप चेन्नई आ रहे हो तो ये एक बहुत अच्छा प्लेस है. आप यहाँ पे जरूर विजिट करें. हाँ या And ऊपर एक म्यूजियम है इस्लाम के बारे में वो डिस्क्राइब. That was very inspirational. Inspiration, and I got goosebumps. We got goosebumps there. Yeah. actually. Glad to hear that. So if you guys are coming, what is the time preference would you guys, let them know? Like, Afternoon. Afternoon. Yeah. I guess after 5 it will close. It is given That's in the true, name. that's 10 to kitna, how much of time you consumed to visit? 3 hours. 2 hours or 3 hours is enough. 2 to 3 hours. So is which enough. means it's a massive place and it's a good visit. Yeah. Okay guys, it was a pleasure talking to you Thank you so much. and good day. Cheers. இது வந்து கிராமத்தில் ஐயனார் கோவில்னாக்கா எல்லை காவல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கிராமத்தில் எல்லையில் அந்த ஐயனார் கோவிலும் இருக்கும். அந்த வரலாறுலாம் இது ஐயனார் கோவில்னாக்கா எல்லை பாதுகாப்பு பண்ணுறது. இதை தாண்டி தான் எதாக இருந்தாலும் உள்ளே வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம். தமிழ் மக்கள் நம்புகிற காரணம் தான். स्टोन क्राफ्ट है सर एक्चुअली. सो ये हम खुद कारीगर है, हम खुद बनाते हैं इसको. और ये बेसिक आर्ट जो है उड़ीसा से है और इसका नाम है बिंधानी आर्ट एंड क्राफ्ट्स. तो हम दोनों का ऊपर यूज़ करते हैं. जैसे स्टोन का ऊपर अभी कार्विंग कर रहे हैं इसको, तो इसके ऊपर हम आयरन टूल्स यूज़ करते हैं इसको कार्विंग करने के लिए, और कुछ डायमंड टूल्स भी यूज़ करते हैं इसको कार्विंग करने के लिए. और स्टोन का ऊपर तो गया, वुडन का ऊपर से हम उसी आयरन टूल्स यूज़ करते हैं. इसके ऊपर यूज़ करके ऐसे वाला टूल्स यूज़ करते हैं, इसके ऊपर कार्विंग करते हैं ये सबको. तो ये सारा जो चीज़ देखते हैं सब हैंडक्राफ्ट है, कोई मशीन चीज़ यूज़ नहीं करते. जो हमको आता है सीखने में, जो सीखा है हमने, तो उसी के ऊपर हम उतारते कार्विंग करने के लिए. तो ये सब है मेरा प्रोडक्ट है, सब बनाया हुआ चीज़ों से. देखिए वहाँ पे सब बहुत इंट्रिकेटिव कार्विंग काम है. कृष्णा जी और अलग अलग ट्रेडिशनल गॉड है इंडियन का. और ये हमारा लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का, जो बहुत फेमस आता है. ये एक्चुअली स्टोन का ऊपर बनाया है. ये देखिए, ये है पुरी जगन्नाथ मंदिर है. ये पूरा स्टोन का ऊपर ये कार्विंग किया है. ये एक्चुअली बहुत बड़ा स्टोन है, इसके ऊपर कार्विंग करके ये पूरा मंदिर को बनाया. और जो वाइट कलर दिखता है, ये कार्विंग किया है.
और इसका जो मेन खासियत है, इसका अंदर में जगन्नाथ सुभद्रा बलराम तीनों है। ये डोर भी और ये सारा पीस स्टोन का है। अंदर में 3 भगवान है इसके अंदर, और सब हाथ का ही कारीगरी है इसके ऊपर। इसके पीछे आगे सब कार्विंग करके बनाया है इसको।